हेलो एवरीवन। मेरा नाम मनीषा है भारती है और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ कॉमन इंटेंशन के बारे में। बिफोर गोइंग टू द कॉमन इंटेंशन आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज जॉइंट लायबिलिटी। तो जॉइंट लायबिलिटी is that sometime offenses are committed by single person and sometime offenses are committed by more than one person. When offenses are committed by more than one person, then what would be the liability of each person is a question. एंड इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है सेक्शन 3 क्लॉज 5 ऑफ BNS एंड सेक्शन 190 ऑफ BNS। इन सुरेश एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ऑनरेबल जस्टिस थॉमस ऑब्जर्व्ड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ vicarious liability. First one is vicarious liability in criminal jurisprudence and the second one is vicarious liability in civil jurisprudence. जो सेक्शन 3 क्लॉज 5 है वो रिकॉग्नाइज करता है vicarious liability in criminal jurisprudence. Vicarious liability makes a person liable for action of an offense not committed by him, उसके द्वारा नहीं किया गया होता है बट किसी अदर पर्सन के द्वारा किया गया होता है जिसके साथ वो कॉमन इंटेंशन शेयर करता है। एंड आगे बात करें तो सेक्शन 3 क्लॉज 5 इज बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ आर वर्सेस क्रूज 1838। इस केस में कोर्ट ने इवॉल्व किया था डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी। सेक्शन 3 क्लॉज 5 डील्स विद सेपरेट एंड जॉइंट लायबिलिटी and section 3 clause 5 does not create any specific offense. It is only a rule of evidence and it is merely a declaratory section. It lays down rule of evidence only that if two or more person commits criminal act in furtherance of common intention of all, each of such person will be liable on the principle of joint and constructive liability. अगर हम बेयर एक्ट पे जाएँ तो सेक्शन 3 क्लॉज 5 ये बात करता है कि व्हेन क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन। इसका मतलब है कि अगर कोई क्रिमिनल एक्ट कई सारे व्यक्तियों के द्वारा इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन किया जाता है तो वो प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए ऐसे ही लायबल होगा जैसे कि वह कृत्य उसने अकेले ही किया हो। और अगर एसेंशियल एलिमेंट की बात करें तो इसके कई सारे एसेंशियल एलिमेंट हैं। पहला है क्रिमिनल एक्ट, दैट देयर मस्ट बी क्रिमिनल एक्ट। एक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 जो कि बात करता है कि एक्ट इज इंक्लूड ऑल्सो इलीगल ओमिशन। इलीगल ओमिशन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 4 and section 2 clause 1 says that act denotes as well as a series of acts as a single act. This means criminal act can be a single act or it can be conglomeration of series of act. दूसरा एसेंशियल एलिमेंट है several act. कॉमन इंटेंशन के लिए बहुत सारे व्यक्तियों की ज़रूरत होती है। दैट देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 or more person involved in the commission of common intention. And section 2 clause 26 define person. If offense is committed by men, women, companies, firm, then section 3 clause 5 will definitely be applicable. And the next essential element is common intention. Common intention denotes that intention is required for common intention. Intention denotes mens rea. There must be common intention. There must be meeting of minds. And in furtherance of common intention of all denotes the activities of all person must be done in furtherance of common intention. And the common intention is different from similar or same intention, as in case of महबूब शाह वर्सेस एम्परर 1945 में सर माधवन नैयर ने बताया था कि केयर मस्ट बी टेकन एंड इट the common intention should not be confused with similar intention. Common intention necessarily implies a pre-arranged plan. And moving forward, in Pandurang versus State of Hyderabad में for the first time after the independence, Supreme Court said that it is well settled established that common intention presupposes prior concert. It requires pre-arranged plan because before a man can be vicariously convicted for the criminal act of another, the act must have been done in furtherance of common intention of them all. इसका मतलब है कि कॉमन इंटेंशन के लिए प्री अरेंज प्लान होना रिक्वायर्ड है एंड देयर मस्ट बी प्रायर कंसर्ट। एंड किसी भी व्यक्ति को लाइबल करने के लिए देयर मस्ट बी कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। एंड मूविंग फॉरवर्ड, इन ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट। इट डजेंट रिक्वायर टू बी प्री अरेंज प्लान, it may develop on the spot. And the fourth essential element is some act must be done by all.
and it was discussed in case of Suresh another versus state of UP. In this case, Supreme Court said that participation of all is necessary, and if there is only common intention and there is no requirement of participation, there is no participation, person may be liable under section 109, that is now 49 under BNS, that is abetment and conspiracy under section 61 clause 2, but this matter will not fall under section 34 of IPC and now 3 clause 4 3 clause 5 of BNS, that is common intention. एंड मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अगले एसेंशियल एलिमेंट की बात करें तो फिजिकल प्रेजेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन. तो at the initial stage it was observed that physical presence is necessary, but एंड इन श्री कांतिया वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फिजिकल प्रेजेंस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी पर्सन इज नेसेसरी, एंड लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाइड इट्स रेशियो इन JM देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1916. एंड सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इन द केस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रेजेंस ऑफ एवरी पर्सन इज नॉट नेसेसरी. एंड मूविंग फॉरवर्ड इन सुरेश अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ UP, सुप्रीम कोर्ट सेड ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक equipment like binoculars, mobile phone, a person may effectively participate in the commission of crime. So physical participation of everyone shouldn't be necessary. At next essential is no distinct offense. As I already said that common intention does not create any substantive offense. It is only a declarative section. It is merely a rule of evidence. It does not create any substantive offense. So no distinct offense. It was discussed in the case of Gurudat Mal versus State of UP 1975, and Supreme Court in this case observed that it is well settled that Section 34 of IPC, now under Section 3 Clause 5 of BNS, does not create a distinct offense. It is merely a rule of evidence, and it lays down a principle of joint liability. And in Suresh another versus State of UP, Honorable Justice Thomas observed that common intention is a rule of evidence and does not create a distinct offense or any substantive offense. It means this section itself does not constitute any offense. The only use of this section is to prove liability of co-accused. So if there is only one person has committed the crime, this section will not be applicable. Thank you. Please comment, share and like. Thank you guys.